Very good afternoon, friends, and welcome to Strategic Management Lecture. Friends, due to some technical issues, I'm not able to operate my laptop as of now. So I'm recording on my mobile. I'm running a screen recording on the mobile, so you may not be able to see the complete PowerPoint presentation. But this is the model which we people were talking about. Right. So, as you all know that we are discussing value chain analysis, right? And we have discussed enough on the value chain analysis, right? As we all know that the model was given by Michael Porter, right? As we all know that the logic, the reason behind value chain analysis is it is to add value to the product or services that is sold to the consumer, right? So value chain analysis, as we all know the name value chain analysis, it is all about adding value to the product and services so that the customer will get the value, and when the customer get value, ultimately the company earns the margin, as you can see in the figure. So to provide the value or to earn the margin or to add value to the product and services, what is needed? As I said that yes, now you can see that, right? As I have already told you that there are two set of activities. One is primary activity and second is support activity. Now, as far as primary activities are concerned, I said that these are the activities compulsory. These are the activities which are bound to be done, right? Compulsory to be performed, because ये जो पांच activity है ये sequence है. I have already said these are sequence, right? Inbound material आता है, operations conversion process होती है, outbound जो finished goods है that goes to the market. Then the sales and marketing activities of advertising and sales promotion, everything is done. Then services, right? And till this point we have discussed, right? So inbound logistics operation, outbound logistics, sales and marketing and services, ये पांच compulsory है, right? If you don't perform this activity, then the value will not be added, right? But apart from this primary activity, some support activities are also necessary. I don't say it is compulsory, but yes, it is desirable. I say that this is desirable. It should be performed, right? क्यों? क्योंकि I have already said that ये चार activity जो है, this four activity add value to this five activity, right? I have already explained कि जो firm infrastructure है, that add firm infrastructure, HR, technology, procurement, ये चारों inbound logistics में value add करेंगे. This four add value to the operation, this four add value to the outbound logistics, this four add value to the marketing, this four add value to the services also. मतलब चारों जो support activity है उसका काम is to support the primary activities, right? तो अभी ये चार support activities which is also known as secondary activities उसको भी समझ लेते हैं. Right. As far as support activities are concerned, or as far as the secondary activities are concerned, the first activity is firm infrastructure. Okay. Now, when I say firm infrastructure, it includes many things. It includes it includes the physical infrastructure of the company, right? Like roads, water availability, electricity availability, power availability, transport availability, warehouse availability, right? These are physical infrastructure. So it includes physical infrastructure like factory का outlet कैसा है, factory में lighting and power facility, water facility, transport, warehousing. These are physical infrastructure. Apart from physical infrastructure, there are some other what I call intangible infrastructure है. Infrastructure मतलब support करना, right? तो ऐसे intangible infrastructure facilities are also there, like management support, like leadership support, like the distribution channel, right? तो ऐसी बहुत सारी, there are many physical and intangible infrastructure services are there which are required in the organization.
कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर जितना स्ट्रांग होगा, फिजिकल एज वेल एज इंटेंजिबल दोनों, राइट, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर जितना स्ट्रांग होगा उतनी ही कंपनी के पास व्हाट आई कॉल उतना ही कंपनी के पास सर्विसेज सपोर्ट एक्टिविटीज ज्यादा होगी, राइट, बिकॉज सी एज आई सेड दैट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एड वैल्यू टू द सब प्राइमरी एक्टिविटीज। जैसे मैंने बोला फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में पावर अवेलेबिलिटी आता है, ट्रांसपोर्ट आता है, वेयर हाउसिंग आता है, it also includes water availability, it also includes the space availability, मतलब there are many things which includes the communication facilities available, मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें which is a part of physical infrastructure, right। कंपनी के पास कितनी कितनी बड़ी स्पेस है फॉर फैक्ट्री एंड प्रोडक्शन प्रोसेस एंड एवरीथिंग। तो जितना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा, राइट, उतना इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स सब कुछ स्ट्रांग होगा। आप देखो कि अगर वेयर हाउस अवेलेबिलिटी अच्छी है, राइट, तो नेचुरली यू विल हैव अ सेपरेट गुड वेयर हाउस फॉर इनबाउंड लॉजिस्टिक्स आल्सो, एंड यू विल हैव अ सेपरेट गुड वेयर हाउस फॉर द आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स आल्सो। सो अगर अगर फैक्ट्री स्पेस अवेलेबल है, फैक्ट्री स्पेस इज इनफ, so if we have got a well ventilated well air circulated factory, तो ऑपरेशन एक्टिविटीज जो है वो अच्छी होगी। ट्रांसपोर्ट अगर अवेलेबिलिटी है, पावर अवेलेबिलिटी है, तो ट्रांसपोर्ट अवेलेबिलिटी है तो समझो कि आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स वुड बी बेटर। हम मार्केट में विल बी एबल टू सेल द प्रोडक्ट, सेंड द प्रोडक्ट इन द मार्केट वेल। डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सही है, इफ यू गॉट अ वेरी साउंड नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, विच इज अ सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम इंटेंजिबल बोलते हैं, राइट। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज well developed, then again outbound logistics will be done better, marketing and sales services will be done, will be performed better. So basically infrastructure, I just use a word software infrastructure. There are as I said that infrastructure are of two types, right? Infrastructure can be physical as well as intangible. तो इंफ्रास्ट्रक्चर के दो टाइप इधर भी है। द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज नोन एज हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड व्हाट आई कॉल दिस इंटेंजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर इज नोन एज सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज जो है, राइट, आप समझो कि अगर लीडरशिप सपोर्ट है, राइट, इफ कंपनी हैज अ गुड लीडरशिप सपोर्ट, राइट, CEOs and VPs and general managers are skilled enough. So what happened that if they are talented enough, they are skilled enough, they support the team and the staff, then again inbound से लेके services तक की सारी activities will be done better by the staff। समझो कि अगर लीडर का सपोर्ट मिलता है तो स्टाफ पीपल और द एम्प्लॉइज who actually carry out this activity, right, will feel motivated. So firm infrastructure includes, as I said, that hard and soft infrastructure, as I said, that physical and intangible infrastructure. तो दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी अगर अच्छी है तो कंपनी विल बी एबल टू परफॉर्म ऑल द 5 प्राइमरी एक्टिविटीज वेल, right? So that was about firm infrastructure. If hard and soft or physical and intangible infrastructural services are well available in the organization, then company will be able to perform the activities or the primary activities well. Okay. Then there is something called human resource management as a support activity. Okay. Now when I say HR, I'm literally talking about employees, right? the type of employee available with the organization is the biggest strategic advantage, right? कि हमारे पास जो एम्प्लॉई है, इफ दे आर स्किल्ड, इफ दे आर टैलेंटेड, इफ दे आर लॉयल, राइट, तो मतलब HR is a big asset for an organization, right? It can be an asset, it can be a liability also. शायद कभी आपने HR में पढ़ा होगा, I don't know, but employee can be asset also, employee can be liability also, right? If employees are समझो, if employees are skilled, talented, loyal enough, so it is an asset for an organization, right? It is a good asset, it is a good infrastructure for an organization, क्योंकि आप समझो ये 5 प्राइमरी एक्टिविटी जो है,
राइट। इनबाउंड से लेके सर्विसेज तक की सारी ऑल 5 प्राइमरी एक्टिविटी, it will be planned by top management, no doubt, but it will be implemented, it will be performed by ultimately the employees, right? कि अगर employee जो है, right, आपके laborers, understand, your front line people, your laborers, your supervisors, your first line managers, जो low bottom line managers है, right, middle level के managers है, this people helps in implementation. समझो कि आपका लेबर अच्छा है, आपका लेबर स्किलफुल है, आपका सुपरवाइजर अच्छा है, तो अंडरस्टैंड द ऑपरेशन एक्टिविटी विल बी डन फैंटास्टिक, राइट। अगर आपका लेबर अच्छा है तो जो कन्वर्जन प्रोसेस है वहां पे एरर कम होगी, वहां पे क्वालिटी के इश्यूज नहीं आएंगे। इफ योर मैनेजर्स आर गुड, राइट, तो आपका इनबाउंड, आउटबाउंड, सेल्स एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज, इवन सर्विसेज एक्टिविटीज विल बी परफॉर्म बेटर, राइट। तो आप समझो कोई भी एक्टिविटी, यू टेक एनी एक्टिविटी फ्रॉम इनबाउंड टू सर्विसेज, कोई भी एक्टिविटी इज नॉट डन विदाउट ह्यूमन बीइंग। हाँ, इट इज डन, इट इज परफॉर्म बाय द ह्यूमन बीइंग ओनली, राइट। अगर आपका एम्प्लॉय सही नहीं है, राइट, देन आपकी प्रोडक्ट कितनी भी समझो, योर प्रोडक्ट इज फैंटाबुलस, राइट, योर प्रोडक्ट हैज very good quality, your product has very good features, everything is very good. But if your HR, if your employees are not skilled enough, then they will not be able to sell the product, right? If your employees are not skilled enough, then they will not be able to provide better services, after sales services to the customer, because customer ने एक बार product खरीदी है, तो that doesn't mean कि बात खत्म हो गई. If the customer has purchased the product once, then he will keep on buying the product, right? And अगर एक बार उसने product खरीदी and if he did not get the services well, he may not buy the product again. तो services देने का काम कौन करेगा? It will be done by the HR, it will be done by the employee, right? So employee is a big asset. Employee helps in all the primary activities well, and that is the reason HR or employees are part of support activities, right? Next, secondary activity or next support activity, as you see, it is technology development. मतलब to what level, to what extent an organization is using uh, technology in its operations, in its activities of the company, राइट, कि कंपनी के अंदर किस हद तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, राइट, हाउ डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब समझो कि कंपनी के अंदर, राइट, कंपनी के अंदर ये टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन ऑलमोस्ट ऑल द फंक्शंस। मैं ये 5 की भी बात नहीं कर रहा हूँ, 5 में तो है ही, right, but whatever you do, whatever activities are done in the organization, it can never perform without technology support in today's scenario. हाँ, अगर 25 साल 50 साल पहले की बात करते तो अलग था, but if in today's scenario, if company wants to earn competitive advantage, understand, अगर कंपनी को competitive advantage लेना है तो technology और use of developed and advanced technology is must, राइट। तो टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस होगी उतना ऑपरेशंस, मतलब उतने फंक्शंस, उतना परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शंस विल बी इजी, राइट। टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। आप देखो, अगर मैं फिर से अगर प्राइमरी एक्टिविटीज को कंटेक्स्ट में बात करूं तो टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, बिकॉज मैंने बोला था, अगर आप याद करो तो, कि इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में क्लासिफिकेशन होता है, कोडिफिकेशन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। तो पहले क्या होता था, ये सब मैनुअल हुआ करता था, राइट। नाउ एवरीथिंग हैज अ सॉफ्टवेयर, राइट। आप यू हैव स्टडीड ERP, राइट, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग इन प्रोडक्शन मैनेजमेंट, राइट। तो ERP क्या है? ERP इज अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेज एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। आप ERP मतलब वो ये 5 एक्टिविटी में आ जाता है, राइट। इनबाउंड से लेके सर्विसेज तक सारी एक्टिविटीज आर मैनेज बाय ERP, राइट। इवन आप MRP1 और MRP2 पढ़े हो, MRP1 इज जस्ट फॉर इनबाउंड लॉजिस्टिक्स एंड ऑपरेशन, बट MRP2 इज अ ब्रॉडर वर्जन, आप पढ़ के आए हो, राइट। तो MRP2 जो है दैट इज एप्लीकेबल ऑन एंटायर प्रोडक्शन एरिया, राइट। तो जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, मोर द एडवांस टेक्नोलॉजी यूज बाय द ऑर्गेनाइजेशन,
more will be the advantage to the organization, because technology better होगी तो services better होगी. Nowadays, we have got a company, right, कि आपको company में phone, like, we have got apps now, Android and what I call this iPhone version वाली apps है. तो आपको वो सर्विसेज बुक करवानी है, आपको कोई कंप्लेन है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, एनीथिंग, नाउ वी हैव गॉट मोबाइल एप्लीकेशंस, एवरी कंपनी हैज द मोबाइल एप्लीकेशन. तो दैट इज टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, राइट. आपको प्रोसेसिंग से लेके प्रोडक्शन से लेके सब जगह पे टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट. जितनी टेक्नोलॉजी हम मैंने काफी बार बोला है कि वी आर टॉकिंग अबाउट AI बेस्ड टेक्नोलॉजी. अब तो मैं ऑटोमेशन की भी बात नहीं कर रहा हूँ, ऑटोमेशन भी आउटडेटेड हो जाएगा शायद आज से 5 साल बाद. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी, राइट, विच इज बेटर देन AI, राइट. ऑटोमेशन आज से 10 साल पहले जब हम पढ़ाते थे, वी यूज्ड टू टॉक अबाउट ऑटोमेशन, दैट एवरीथिंग टेक प्लेस ऑटोमेटिकली. बट अब ऑटोमेशन से भी एडवांस टेक्नोलॉजीज आर कमिंग वेयर एवरीथिंग इज मैनेज्ड बाय रोबोट्स एंड एवरीथिंग इज AI बेस्ड. आर्टिफिशियल मशीन विल हैव इंटेलिजेंस, राइट. तो this is what I call technology development, and more the technology usage, better will be the primary activities performed, right. जितना टेक्नोलॉजी का यूजेज ज्यादा होगा उतनी प्राइमरी एक्टिविटी अच्छे से परफॉर्म होगी. सो दैट इज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. देन प्रोक्योरमेंट. ओके, नाउ प्रोक्योरमेंट इज बाइंग, परचेज. प्रोक्योर करना मतलब परचेज करना, राइट. कि whatever we buy in the organization, right, including your raw material, parts, tools, equipment, the stationery, the devices, everything, whatever we buy in the organization, that is actually the part of procurement, मतलब खरीदना. अब you would be wondering कि ये procurement का value chain में क्या लेना देना, how procurement affects the value chain. तो एक सीधी बात है, समझो कि आप जो भी खरीदते हो, right, whatever you buy from raw material to anything, right, the quality of the things that you purchase is very important, right. कि what आप शायद परचेज मैनेजमेंट पढ़े हो एंड परचेज मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़े हो, right. You studied the principles of purchase management, that क्या खरीदना है, what to buy, when to buy, how to buy, मतलब आप क्या खरीद रहे हो, कितना खरीद रहे हो, कहाँ से खरीद रहे हो, किस टाइम पे खरीद रहे हो. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, कि आप कौन सी किस टाइप की क्वालिटी खरीद रहे हो. बिकॉज इफ यू आर नेचुरली, इफ योर प्रोक्योरमेंट सिस्टम इज वेल डेवलप्ड, राइट, कि आजकल क्या है, कंपनीज के अंदर परचेज डिपार्टमेंट होते हैं, यू ऑल नो वेरी वेल, right, and purchase managers, right, are now very skilled people. ऐसा नहीं है कि कुछ भी खरीद लिया. तो परचेज मैनेजर जो होते हैं, दे अंडरटेक अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, राइट, के सैंपल मंगवाते हैं, कंपैरिजन होती है, राइट, क्वालिटी चेक होता है. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर डन इन परचेजिंग, एंड सो प्रोक्योरमेंट मींस परचेजिंग, राइट. एंड ये जो परचेजिंग है, ये परचेजिंग जितना सिस्टमैटिकली होगा, जितना एडवांस होगा, जितना क्वालिटी परचेज होगा, उतना दिस ऑल 5 एक्टिविटीज विल बी सपोर्टेड. बिकॉज परचेज की बात करते हैं तो वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट रॉ मटेरियल, वी आर टॉकिंग अबाउट इवन टेक्नोलॉजी परचेज. टेक्नोलॉजी का यूज भी जो है उसको भी परचेज किया जाता है, राइट. तो आप जब कुछ भी खरीदते हो, राइट, तो उस टाइम पे कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हेन आई से प्रोक्योरमेंट, राइट, वन थिंग इज what you buy, matlab the kind of quality of the products, and anything that you buy should be of should be of very high standards, right. Because आप जितना qualitative खरीदोगे उतना आपकी finished product में उसका reflection दिखेगा, right. उतनी आपकी better product होगी. तो you should buy qualitative products. Second, the rate at which you buy, मतलब आप किस रेट पे खरीदते हो. Because sometimes it happens that if you end up with buying at a higher rate than the market rate, right, आप मार्केट से ज्यादा रेट पे खरीदोगे तो naturally your cost of production will be affected, right, your price will be affected. तो प्रोडक्शन समझो कि प्रोक्योरमेंट प्राइस ज्यादा होगी तो प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा होगी, right. So we have to ensure that we buy at a right price, right quality,
right quantity, right price, right time, right and right place. मतलब आप कहाँ से खरीदते हो, from where you buy, right? मतलब आपका जो supplier है, right? That supplier should be reliable supplier. Supplier should be authentic supplier. Okay. So up to this point we are talking. In the next lecture we'll talk about next session. Thank you.